Assalamu alaikum, dear all students of class 8. This is your teacher Miss Sahniyat, and I hope you all will be fine and safe at your homes. As you all know, in the month of September, we have a unit how to become a responsible citizen. And I have given you a complete explanation of this chapter also. Now in this session I am going to a revision of this unit, and the name of our unit is how to become a responsible citizen. Students, as you all know, we have 5 question answers in this unit, and exercise B, which is fill the blanks, and the fill the blanks consist of 5 points. We have 5 fill the blanks in this unit. Now I am going to explain you the some question answers of this unit. So, number 1, why was Rashid Minhas awarded Nishan-e-Haider? First, let me tell you a short description about Rashid Minhas, that who was Rashid Minhas. As you all know, I have defined you in our previous session that Rashid Minhas was only 20 years old and still under training at PAF base Masroor, and he
Assalamu alaikum, dear all students of class 8. This is your teacher, Miss Sahniyat, and I hope you all will be fine and safe at your homes. As you all know, in the month of September, we have a unit how to become a responsible citizen. And I have given you a complete explanation of this chapter also. Now in this session I am going to a revision of this unit, and the name of our unit is how to become a responsible citizen. Students, as you all know, we have 5 question answers in this unit, and exercise B, which is filling the blanks, and the filling the blanks consist of 5 points. We have 5 filling the blanks in this unit. Now I am going to explain you the some question answers of this unit. So, number 1, why was Rashid Minhas awarded Nishan-e-Haider? First, let me tell you a short description about Rashid Minhas, that who was Rashid Minhas. As you all know, I have defined you in our previous session that Rashid Minhas was only 20 years old and still under training at PAF base Masroor, and he
students, I am moving towards the another question, which is, what did Allama Iqbal say about respecting humanity in his Allahabad address? Allama Iqbal ने क्या कहा था इंसानियत की रिस्पेक्ट के बारे में, अज़मत इंसानियत के बारे में अपने इलाहाबाद एड्रेस में? आपको ये बताना है. सो द आंसर इज अल्लामा इकबाल एक्सप्लेन द आइडिया ऑफ पाकिस्तान इन द इलाहाबाद एड्रेस. अल्लामा इकबाल ने जो है वो पाकिस्तान बनने का जो आइडिया था वो पेश किया था, एक्सप्लेन किया था अपने इलाहाबाद एड्रेस में. He said, उन्होंने कहा, a community which is inspired by feeling of ill will towards other communities is low and ignorable. उन्होंने कहा कि एक ऐसी कम्युनिटी जो कि इंस्पायर हो, वो लोगों को ये इंस्पिरेशन दे कि जिसमें ऐसी फीलिंग्स हैं, इल फीलिंग्स हैं, मतलब कि जिसमें उस कम्युनिटी को एक ख़ास मकाम, इज़्ज़त और वक़ार हासिल ना हो. तो ऐसी कम्युनिटी जो होती है वो एक पिक्चराइज करती है लो और इग्नोरेबल कम्युनिटी की. I entertain the highest respect for the customs, laws, religious and social institutions of other communities. और उन्होंने फर्दर ये कहा कि मैं बाकी जो अदर रिलीजन्स हैं इस्लाम के अलावा, मैं उन बाकी मज़ाहिब के कस्टम्स, लॉज और सोशल इंस्टीट्यूशंस की जो हूँ वो दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ. इट इज़ माई ड्यूटी अकॉर्डिंग टू द टीचिंग्स ऑफ कुरान. और ये मेरी ड्यूटी है, ये मेरा फ़र्ज़ है कुरान की तालीमात के मुताबिक, इवन टू डिफेंड देयर वर्शिप प्लेसेस इफ़ नीड बी, कि उनके वर्शिप प्लेस, हिंदुओं के वर्शिप प्लेसेस को जहाँ वो मज़हब, जहाँ पर वो अपने मज़हब को फॉलो करते हुए अपनी इबादत करते हैं, तो मेरी ये भी ड्यूटी है कि मैं उन वर्शिप प्लेसेस को जो हूँ वो उसको डिफेंड करूँ, उसका दिफा करूँ अगर ज़रूरत हो तो. यहाँ पर अल्लामा इकबाल ने जो है वो पाकिस्तान बनाने का जो आइडिया सजेस्ट किया था अपने इलाहाबाद एड्रेस में, उन्होंने कहा कि वो कम्युनिटी जो कि इल फीलिंग से इंस्पायर हो तो वो बाकी दुनियावी ममालिक में एक दुनियावी हैसियत नहीं रख सकती, वो काफ़ी लो और इग्नोरेबल कम्युनिटी बन जाती है. और मैं जो हूँ वो हाईएस्ट रिस्पेक्ट पे करता हूँ, मतलब कि मैं वो मज़ाहिब जो इस्लाम के उलट हैं, मेरे दिल में उनके लिए जो है वो उनके लॉज, उनके कस्टम्स, उनके रिलीजियस और सोशल इंस्टीट्यूशंस के लिए मेरे दिल में जो है वो हाईएस्ट रिस्पेक्ट है दूसरी कम्युनिटीज़ के मज़ाहिब के लिए. और कुरान की टीचिंग्स के मुताबिक ये मेरी ड्यूटी भी है कि अगर उनके वर्शिप्स को, उनकी इबादत गाहों की जो है हिफाजत भी करनी पड़ी तो मैं वो करूँगा. मतलब कि अल्लामा इकबाल इस्लाम के अलावा भी जो दूसरे मज़ाहिब हैं उन मज़ाहिब की जो है वो रिस्पेक्ट करते थे, उन मज़ाहिब की जो रिलीजियस और सोशल इंस्टीट्यूशंस थे, कस्टम्स थी, लॉज थे, उसकी जो है वो दिल से रिस्पेक्ट करते थे. और वो ये कहते थे कि कुरान की टीचिंग्स के मुताबिक, कुरानी तालीमात के मुताबिक अगर उनकी इबादत गाहों की हिफाजत भी करनी पड़ी तो मैं वो करूँगा. इस तरह उन्होंने यहाँ पर अपने इस इलाहाबाद एड्रेस में इंसानियत की इज़्ज़त और वक़ार के बारे में अपने ख़यालात का इजहार किया. Now the question, what do you think what your purpose in life? आप क्या सोचते हैं कि आपका ज़िंदगी का मकसद क्या है? I am a student of class 8, but my ambition is to be a doctor. By becoming a doctor, I shall serve the poor. मैं एक क्लास 8 का स्टूडेंट हूँ, लेकिन मेरा जो ज़िंदगी का मकसद है, मेरा एम्बिशन जो है वो एक डॉक्टर बनना है. By becoming a doctor, और डॉक्टर बन के I shall serve the poor, और मैं जो हूँ वो किसको सर्व करूँगा? पुअर्स को, गरीबों को, एंड द सिक और बीमारों को. I shall go to the village and give them free treatment.
treatment. اور میں ڈاکٹر بن کے جو ہوں وہ ولیج جاؤں گا, گاؤں وزٹ کروں گا اور جو ہے فری علاج کروں گا, فری ٹریٹمنٹ دوں گا. If my ambition is fulfilled, I shall do my best as a doctor. اور اگر یہ میرا ایمبیشن جو ہے وہ پورا ہو گیا تو میں اپنا جو ہے وہ ایک نمایاں کردار ادا کروں گا اور جو ہے ایک بیسٹ ڈاکٹر بن کر دکھاؤں گا. I want to be an ideal doctor. It is a noble profession. اور میں جو ہوں وہ ایک آئیڈیل ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں کیونکہ یہ ایک بہت جو ہے وہ عظیم ایک نوبل پروفیشن ہے. So the answer of this question is the purpose in life is becoming a doctor, and by becoming a doctor I shall serve the poor and the sick. I shall go to the village and give them free treatment. If my ambition is fulfilled, I shall do my best as a doctor. I want to be an ideal doctor and it is noble profession. Now students, I am going to explain the fill in the blanks of this chapter. Here I have written the answers of the fill in the blanks, and from book I am going to read. Number 1, in the modern world we are free to express our views and this is called, اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ماڈرن جدید دور کے اندر, اس جدید دنیا میں ہم اتنے فری ہیں کہ ہم اپنے آئیڈیاز اور اپنے ویوز کو جو ہے وہ ایکسپریس کر سکیں, اور یہ کہلاتا ہے, اینڈ دا آنسر از فریڈم آف اسپیچ. مطلب ہمیں اس ماڈرن ورلڈ میں اتنا حق حاصل ہے کہ ہم اپنے رائٹس کے لیے بول سکیں, ہمیں اتنے حقوق حاصل ہیں, تو یہ کہلاتا ہے فریڈم آف اسپیچ. Now the number 2, Rashid Minhas went for his solo flight on. راشد منہاز جو ہے وہ انہوں نے اپنی سولو فلائٹ کب لی تھی؟ 20 اگست 1971. 20 اگست 1971 کو. Now the number 3, never be dashed to accomplish your aims. کبھی بھی اپنے ایمز کو کمپلیٹ کرنے کے لیے, حاصل کرنے کے لیے اپنے ایم کو ہمیں کیا نہیں ہونا چاہیے؟ اینڈ دا آنسر از مین, سیلفش اور ٹرکی. ہمیں اپنا مقصد, زندگی کا مقصد حاصل کرنے کے لیے کبھی ہمیں مطلبی, خود غرض اور ٹرکی نہیں ہونا چاہیے. وی شوڈ ناٹ بی مین, سیلفش اور ٹرکی. Now the number 4, if you have dreams you must dash hard. اگر آپ کے بہت سارے خواب ہیں, then you must dash hard for them to come true. اور ان خوابوں کو پورا کرنے کے لیے آپ کو کیا بہت سخت کرنا ہے؟ work. And the answer is work. You must work hard for them to come true. Now the number 4, freedom of speech doesn't mean the freedom to dash. اب جس طرح میں نے آپ لوگوں کو بتایا, فریڈم آف اسپیچ جدید دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں اتنا حقوق حاصل ہے کہ ہم اپنے لیے بول سکیں, لیکن فریڈم آف اسپیچ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فریڈم ٹو ڈیش, فریڈم ٹو انسلٹ, کہ اگر آپ کو اتنا بولنے کا حق حاصل ہو گیا ہے تو آپ کسی کی بے عزتی کریں, یہ حق کسی کو حاصل نہیں ہے. So students, I hope you all have understood the question answers and the fill in the blanks of this unit, and in our revision unit we have completed the unit how to become a responsible citizen. I hope you all have understood the question answers and the fill in the blanks also. Now the time of the today's session has been ended here. Till then, stay safe and stay at your homes. Allah Hafiz.